Very good evening, everybody. Very good evening. Welcome to the lesson today. Uh, Today we'll begin with a new topic. Today we'll begin with critical reasoning, various aspects of critical reasoning. Um, but before we delve into the nitty-gritties of critical reasoning and why we're studying critical reasoning, what are the tricks we can try and master when it comes to various aspects of critical reasoning. Before we delve into all that, I'll give you an introduction to the Unacademy platform. Unacademy is perhaps India's largest learning platform when it comes to preparing for various types of competitive examinations. Uh, and yes, management examinations is one such competitive, area of competitive exams that Unacademy caters to. Uh, I am Prankur Arora. I am going to be your instructor on this journey. Good evening, Sharaya. So today, uh, today, Sharaya, we'll be studying various aspects of critical reasoning. Welcome to the lesson. Yes, so I was talking about myself. I'm Prankur Arora. I've been a trainer and a coach for a while. I've been consulting with various organizations on various aspects of communication. I've worked with organizations like Interglobe, BD India, Marico, Powergrid, and the likes. I've also authored a book. It's called It's Not Funny. It's a book of satirical fiction. You can find it on Amazon. I also hold advanced certifications in various aspects of facilitation from an American organization called Leadership Management International. And apart from all this, I run my own production house. It's called Tamasha Entertainment. I'm going to be your instructor on this journey of learning various topics of verbal aptitude and reading comprehension. Now, there are two, three things that you have to take care of whenever you're preparing for a competitive exam. What is the kind of pedagogy your teacher follows, and what is the kind of comfort level you're able to develop? All right, Manan, I apologize for this mistake. Welcome to the lesson, Manan, regardless. Yes. So, Unacademy scores really high on these aspects of maintaining a great pedagogy and bringing you great educators and allowing you various types of conveniences to develop a comfort level with the educators and the pedagogy. Some of those things include giving you access to daily life classes and opportunities to engage in discussions, ask your doubts, and we conduct various live polls on the platform. You get to participate in those polls to try for a position on the leaderboard. All the courses on the platform are structured and audited by subject matter experts. Plus, with one subscription, you get unlimited access to anything and everything that's available on the platform. As I mentioned, there are quite a lot of educators available on the platform at all times, teaching various types of courses. Live classes is an amazing USP for the of the platform, and you can experience these live classes for free and decide for yourself whether this is something that will be working for you in your learning journey or not. Uh, on a daily basis, a lot of new batches and courses keep on coming up on the platform. So even if you join 10 days down the line, there'll be new batches for you available for you to join in, and there'll be new courses that you could perhaps play around with. Plus, all the courses that have come before you're joining the platform, the recordings of all those courses and those batches are available. As I mentioned, a really cool thing about the platform is that it gives you the ability to design your own schedule. So you make your own schedule. Language is never a barrier because, educators teach in vernacular languages as well. Plus, as I mentioned, you design your own schedule, so you learn anytime and anywhere. It's totally up to you. You set your own time, you set your own schedule. As I mentioned, on the platform you get to interact with the educators. We hold various kinds of discussions. You get your doubts cleared in real time, and the feature of the live polls that I've already mentioned. Another very important thing is that Unacademy gives you various kinds of analytics on your performance, so that you can look in that mirror and tweak your learning journey. Basically, if it tells you that you're spending 10 minutes extra on this kind of question, so you can look at that insight, and you can
brush up on the concepts that pertain to that very question, right? So such insights help you during your learning journey. So that's that. Plus, coming to the subscription models that the platform follows, as you can see, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है सब्सक्रिप्शन का, द कॉस्ट इज गोइंग डाउन ड्रामेटिकली. I would recommend you opt in for a longer duration because preparing for competitive exams is a longer engagement. Plus, you need to give yourself that kind of time to develop a chemistry with the educator. Plus, if you use my first name, which is Prankur, Prankur, if you use that as your referral code, you get 10% off on any of the subscriptions that you opt in for. Having said that, let's jump into the lesson for today. Today, we'll be studying various aspects of critical reasoning. Now, why critical reasoning? If you one, critical reasoning is one of the major topics when it comes to GMAT, but even when it comes to CAT, out of the 24 odd questions that appear in reading comprehension, on an average, 15 or 16 of those questions pertain to various aspects of critical reasoning. And all critical reasoning does is it tests your logical reasoning ability. ठीक है, इंग्लिश काफी टफ होती है, भारी भरकम वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज होते हैं, बट इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज सेंटेंसेस, all critical reasoning tests you on is logic, plain and simple logic. Now what happens is quite a lot of people get bogged down in the very beginning when it comes to reading comprehension or critical reasoning, because as I mentioned, the language is tough. So some people get intimidated, some people get annoyed, but the trick, as I mentioned, is to develop those skills to absorb the information effectively, क्योंकि बहुत ज़्यादा information relay होती है इन questions में. So all you have to do when you're preparing for reading comprehension or critical reasoning is develop that ability to absorb everything that is written down there very, very effectively. And how do we do that? How we do that is, उससे पहले अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को एनालाइज करोगे तो मेजरली आप दो तरह की रीडिंग करते हो ऑन अ डेली बेसिस. वन is the reading that you do for your work. So some of you are working, some of you are students, right? So all the reading that you do either when you're studying for your subjects or when you're working, basically आप लोग emails पढ़ते हो, आप लोग research papers पढ़ते हो, आप लोग अपने subject के topics पढ़ते हो, right? So all this is very, very professional. All this is mandated professionally or as a part of the curriculum that you're studying if you're a student, right? This is number one. Number two, the second kind of reading habit that people have is leisure reading, right? Some people read non-fiction, some people read fiction, some people read magazines, some people read newspapers, some people read comic books. ठीक है, तो ये सारी leisurely reading हो जाती है. अब ये जो दोनों टाइप्स की रीडिंग है, ये दोनों इफेक्टिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग ईदर फॉर क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आपको क्या डेवलप करना है? आपको डेवलप करना है a habit of active reading. What do I mean by active reading? Active reading वो होती है जिसमें you don't have to revisit whatever it is that you've just read. Active reading is when you read something once and you understand what it means, so you don't have to revisit it. For example, आपने critical reasoning का एक question पढ़ा एग्जाम में, right? उस पे क्वेश्चन पे आपने 30 seconds spend कर दिए. The passage, you've spent 30 seconds on the passage. Now you read the question again and then you go back to the passage again. ठीक है, तो this is what people tend to do. This is what learners tend to do, where they end up spending 1.5 minutes just reading the passage and the question. Whereas what we have to do is हमें एक ही बार पढ़ना है और उसको समझ लेना है. That is the mastery that we have to bring about, and that can only happen when you minimize this knack for rereading everything you've just read. नॉवेल्स में भी लोग ऐसे करते हैं, राइट बिफोर यू टर्न द पेज यू जस्ट रीड द लास्ट पैसेज अगेन सो दैट यू रिमेंबर कि अच्छा अभी अभी ये पढ़ा है, अभी हमारे कैरेक्टर के साथ ये हुआ है, सो नाउ वी कैन टर्न द पेज एंड वी कैन start reading again, start reading whatever is going to come next in our story. This is a tendency that people have that we have to do away with. ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक्टिव रीडिंग डेवलप करनी है, उसकी हैबिट डेवलप करनी है. नाउ आई विल टेल यू एज वी गो ऑन ड्यूरिंग द सेशन हाउ वी कैन डू दैट. Having said that, let's move on to the next slide. Now, whenever we are reading something, now these are 3 tricks that basically I use and I recommend to people when it comes to mastering active reading. ठीक है,
whenever you want to master active reading means that you've understood whatever you've read, right? Now if you've understood whatever you've read, you can obviously summarize, right? You can obviously summarize whatever it is you've read. ठीक है, अब समराइज करने के लिए मैंने तीन चीजें इधर लिखी हैं: clear, concise, conversational. What do I mean by these three things? What I mean by clear is, for example, you've just read a passage that has 4 to 5 lines. ठीक है, 4 से 5 लाइन्स हैं उस पैसेज में. अब आपने उस पैसेज का मतलब समझ लिया है, राइट? वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज आई वॉन्ट यू टू समराइज वट एवर यू अंडरस्टूड इन दीज 4 5 लाइन्स इन 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम. ठीक है, और ये जो 2 to 3 लाइन्स हैं, दिस हैज टू बी कंफर्टेबल फॉर अ 10 to 12 year old टू अंडरस्टैंड. मतलब आपने, फॉर एग्जाम्पल, यू रेड समथिंग ऑन द न्यूक्लियर प्लान ऑफ नॉर्थ कोरिया, right? You have to summarize it in 2 to 3 lines and you have to make it so clear कि 10 साल का बच्चा अगर वो चीज आपसे सुने या पढ़े तो उसको भी समझ आ जाए. Concise, I again go back to this. If you've summarized 4 to 5 lines, it has to be concise. It has to be 2 to 3 lines, not more than that. What I mean by that is, if you're summarizing something, right? If you're summarizing something, it has to not be redundant. You don't have to repeat the things that are mentioned in the paragraph. You just have to summarize them. And finally, what do I mean by conversational? If you've understood something, अगर आप अपने parents को बताओगे, आप अपने siblings को बताओगे, आप अपने girlfriend boyfriend को बताओगे, तो you'll explain it in very conversational and very easy to comprehend terms. अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो, there is this concept called the KISS concept. Keep it simple and short, right? So now what I want you to do is, जब भी आप newspaper भी देखोगे, even if you open the editorial section of the newspaper, all the articles, they're mentioned in paragraphs. ठीक है, कोई भी article ऐसे अगर essay की तरह भी लिखा हो ना, they always divide it into paragraphs. Why do they do that? Because they know that if it is 4 to 5 lines in one paragraph, it is easy for the other person to understand. So now what I want you to do is, whenever you're reading something, right, whenever you've just read something, try to follow these three things and either write down the summary of it or just say it out loud in your head, right? For example, you open today's newspaper, you read the first paragraph in an editorial section, just try to summarize it in as clear terms as you can, as concise terms as you can, and make the language as conversational as you can. Now this is just the beginning, right? So I am saying that if you do this for at least 4 to 5 days, it will become a habit. It will be a part of your muscle memory. So whenever you're reading something next, whenever you're solving reading comprehension questions or critical reasoning questions, it will become a habit. And that's what we want. We want it to become a habit. All right. Now I'll give you an example. ठीक है, एक second. Right, so this is a passage that I've picked out from the internet, and we'll try to summarize it right now, and we'll follow the clear, concise, and conversational metrics that I've listed down. So just read this out loud. Istanbul, Turkey. Okay, so this is a paragraph passage that talks about Istanbul, Turkey. Though Turkey has lurched forward without a functioning government for over 6 weeks since its Prime Minister Mesut Yilmaz lost a confidence vote in parliament, its foreign policy has remained assertive. Turkish leaders have learned to exploit its Eurasian position and burgeoning economy to achieve its policy goals. Have you understood what this paragraph is saying? What is this paragraph saying? This paragraph is basically telling us कि अभी कुछ गड़बड़ हुई है, right? अभी कुछ गड़बड़ हुई है. So Turkey's politics is a bit messy. Turkey's government is in a bit of a mess. This is what the paragraph is telling us. Plus the last line is telling us कि भाई पैसा भी कम है, right? They are down on money, or rather they are increasing their clout, and their
more on money, right? Even if the government is in mess, इनका political cloud बढ़ रहा है और इनके पास पैसा भी ठीक ठाक है. ठीक है, this is what the passage is telling us. Basically, the entire 4-5 lines are telling us two things. One, टर्की की गवर्नमेंट मेस में है, बट इन स्पाइट ऑफ द मेस टर्की का पॉलिटिकल क्लाउट अच्छा है. ठीक है, दे वांट टू एक्सप्लॉइट देयर यूरेशियन पोजीशन. यूरेशियन मींस यूरोप एंड एशिया, राइट? सो यूरेशिया is the combination of Europe and Asia. So they want to exploit their Eurasian position and the burgeoning economy. Burgeoning means thoda paisa bhi theek thak hai. The economy is growing, right? So these two things are explained through 4-5 lines in this passage. This is what I want us to develop, this skill. कि आपने एक पैसेज पढ़ा और आपने 2 लाइनों में बता दिया पैसेज बता क्या रहा है आपको. ठीक है, लेट्स डू दिस एक्टिविटी अगेन. Now this is a continuation. This is the second passage and this was the first passage. Second passage says, just read it out loud. Give yourself 30 seconds. Despite stern warnings of economic sanctions and military intervention, Turkey has benefited from a growing power vacuum in the Middle East, which for decades has been dominated by Russia, Iran, Iraq, and former satellites of the now defunct Soviet Union. In recent months, a series of foreign policy successes has emboldened the Turks to flex their muscles and build their influence in this chaotic region. ठीक है, ये बहुत भारी भारी सेंटेंसेस हैं. What is the clear, concise and conversational meaning of this passage? The clear, concise, conversational meaning of this package is कि काफी सारी बाकी जो कंट्रीज है ना मिडिल ईस्ट में वो वीक है. देयर इज अ पावर वैक्यूम. ठीक है, सो अदर कंट्रीज आर वीक इन दैट रीजन. देयरफॉर इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर टर्की टू एक्ट एंड अचीव सम सक्सेस, राइट? क्योंकि बाकी कंट्रीज वीक हैं तो टर्की के पास एक अपॉर्चुनिटी है. फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट सेंटेंस देखो. इन रीसेंट मंथ्स अ सीरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस has emboldened the Turks to flex their muscles and build their influence in this chaotic region. So what are they saying? कि opportunity है टर्की के पास. This is what the passage is saying. So two things again. 2 sentences in 2 lines. We have summarized what this passage is telling us. This is how we have to approach our questions when it comes to critical reasoning or reading comprehension. कि आप passage पढ़ो. Before moving on to the next passage, make sure you're able to be clear, concise and conversational in what the passage is trying to say. Alright, so this is a habit that we have to develop. Moving forward. अब काफी बार क्या होता है, जितने भी आप हमारे पास पैसेजेस आते हैं ना, उन सब पैसेजेस में ये ट्रिगर वर्ड्स यूज होते हैं. आई विल यूज अनदर टर्म, एंटिसिपेट व्हाट्स नेक्स्ट की जगह मैं बोलूंगा कि हमारे पैसेजेस में काफी सारे ट्रिगर वर्ड्स आते हैं. सो इफ यूर बिल्डिंग योर नोट्स, note this thing down. So if a passage is carries a word like furthermore, in addition to, also, to, so what they are saying is कि passage में आगे additional point आने वाले. उन्होंने 1-2 point बता दिए, अब और additional points आएंगे. So this is a trigger word to understand where the passage is going. Similarly, likewise, for example, this is obvious कि ये और ज़्यादा examples देंगे आपको passage में. Firstly, secondly, thirdly. So they're talking about structure. They're talking about what came first, what came second, what came third. ठीक है, तो ये chronology बताएंगे आपको passage में. Then there are words like thus, therefore, in conclusion. These are obviously telling you about conclusions. These are obviously leading you to concrete statements that the passage wants to make. And finally, there are trigger words like although, though, but, despite, in spite of, however, unless, while. What are these words? These words form contrast. These words tell us although ये चीज हुई, for example, although people think smoking makes them look cooler, although people think smoking a cigarette makes them look cooler, the facts tell us that smoking gives other people or smoking gives people lung cancer. ठीक है, तो we are contrasting some information.
वी आर सेइंग कि ठीक है लोगों को कूल लगता है स्मोक करते हुए, एट द एंड ऑफ द डे तो वो मर ही रहे हैं ना कैंसर की वजह से, राइट? सो इट इज गिविंग यू अ बिग कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, वील गो थ्रू एन एग्जाम्पल नाउ. रीड दिस पैसेज. Scientists have posited for centuries that there is intelligent living life somewhere in the universe. In fact, most experts speculate that somewhere in the outer regions of the universe there are carbon based life forms that draw oxygen and expel carbon dioxide in order to survive. However, देखो इतना सारा आपको पैसेज ने बताया, पैसेज आपको क्या बता रहा है कि यूनिवर्स में बाहर लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स में कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स होंगी जो ऑक्सीजन लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजेंगी जैसे हम लोग करते हैं टू सरवाइव. फिर आ गया हाउएवर, मतलब जितना भी आपको पहले इस पैसेज ने बताया है अब पैसेज टर्न करने वाला है. एंड लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. हाउएवर, these musings are utterly without merit. There is now concrete, irrefutable proof that outer space is a bitterly cold, lifeless void. तो पहले 4 सेंटेंस आपको पैसेज ने बताया कि भाई अर्थ के बाहर इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा लाइफ है, उनका रेस्पिरेशन भी हमारी तरह होता है, ये सब कुछ आपको पैसेज ने बताया. फिर एक वर्ड से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि आगे पैसेज का पूरा स्टांस चेंज होने वाला है. Why have I written anticipate what's coming next? Because these words they tell you in advance कि आगे पैसेज कौन सी डायरेक्शन लेने वाला है, राइट? सो ट्राई एंड डेवलप अ टेंडेंसी टू एंटिसिपेट what will happen next in the passage if you come across words like these. And let me tell you, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आप और सारे वर्ड्स और फ्रेजेस भी आइडेंटिफाई कर पाओगे जो आपको एंटिसिपेशन की हैबिट डेवलप करने देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाउ एवर आते ही पैसेज का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, पैसेज का बिल्कुल स्टांस बदल गया, राइट? सो ट्राई टू मेक नोट ऑफ दिस एंड कीप दिस इन योर स्ट्राइड वेन एवर यूर सॉल्विंग सेंटेंस करे, सॉल्विंग critical reasoning or reading comprehension questions, right? Moving on. Now, whenever there is a critical reasoning question that is either a standalone question or part of a reading comprehension question, वो क्या चीजें टेस्ट करते हैं? वो आपको प्रेमाइस और assumption, ये दो चीजें होती हैं किसी भी पैसेज में. These are two important aspects of any question of pertaining to critical reasoning, right? For example, let's read this statement. I want to go to the market. I want to go to the market. My car broke down yesterday. Therefore, I need to go buy a new car. ठीक है, अब आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है. आई मेड अ ग्रामेटिकल एरर हियर. ठीक है, यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट. ठीक है, so there are two statements and then as I mentioned in the previous slide, therefore जो है कहाँ गया? Therefore is conclusion, right? So we have statement number 1, we have statement number 2 and then we have a conclusion. ठीक है, this is a conclusion. Now this is a very simple example. आपके ऐसे questions नहीं आएंगे but this will give you the gist of what I am trying to say. What is this statement number 1? Statement number 1 is your premise number 1. ठीक है, premise number 1 क्या है कि मेरे को मार्केट जाना है. premise number 2 क्या है? अब premise 2 is car is not working, car broke down. ठीक है, अब हमारे पास यही दोनों premise हैं, हमारे पास और कोई additional information ही नहीं है, but हमारे पास कंक्लूजन है कि therefore I need to go buy a new car. Now what are the assumptions that are coming into play इस कंक्लूजन के लिए? What are the assumptions? There are essentially two assumptions. If any of you can identify what those assumptions are, hit me up in the comments. ठीक है, I'll wait for 15 seconds and then I'll discuss these two assumptions with you.
what are these two assumptions? Okay, assumption number one is कि assumption number one is कि आप लोग premise से ही निकालो assumption. I want to go to the market, my car broke down yesterday, therefore I need to go buy a new car. Assumption number one कि आप market बस कार से जा सकते हो, आप बस से नहीं जा सकते, आप मेट्रो से नहीं जा सकते. Even though this is true during the COVID times, but there are other means. आप ऑटो से नहीं जा सकते, right? So we have made these assumptions कि हम मार्केट बस कार से जा सकते हैं. दूसरा assumption क्या है हमारा? दूसरा assumption हमारा है कि कार जो है वो रिपेयर नहीं हो सकती, right? Car broke down yesterday. What if I get my car repaired? Can't I go to the market then? Why do I have to buy a new car? Won't repairing the car be cheaper? So these are two assumptions that the argument makes after giving us the limited information and reaching a conclusion. Alright, so your passages, your critical reasoning questions, or your reading comprehension questions, all you have to break down is you have to break down the question into what the premise is and what the assumption is. तो आपको हमेशा लॉजिकली आंसर समझ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे दो प्रेमाइज थे हमारे पास और उसके बाद हमारे दो अजम्पशन थे इस कंक्लूजन को रीच करने के लिए, राइट? I'll take you through some examples. We'll practice a little bit before ending today's lesson so that you're able to identify such assumptions in tougher questions. Alright? Now, what will our plan of attack be? हमारे पास कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आए, हमें उसे अटैक कैसे करना है? सबसे पहले माई strategy is I always read the question. I always read the question before reading the passage. ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि एक्सपेक्टेशन क्या है. अदरवाइज द टेंडेंसी इज आप पैसेज पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर से आप पैसेज पढ़ो. मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं ताकि मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए. देन रीड द पैसेज एंड पैराफ्रेज द पैसेज. व्हाट डू आई मीन बाय पैराफ्रेज? मैंने जो बताया था, क्लियर, कंसाइज, कॉन्वर्सेशनल. यू रीड द पैसेज, यू टेल योर सेल्फ इन योर हेड कि अच्छा इस पैसेज का ये मतलब है 2 लाइनों में. आपने 4-5 लाइनों का पैसेज पढ़ा, अब आप उसको पैराफ्रेज करके 2 लाइनों में अपने दिमाग में रिपीट करो. ठीक है, एंड देन गो थ्रू द आंसर चॉइसेस. आंसर चॉइसेस जब आप रीड करोगे एक एक करके, तो आपको सबसे पहले इररेलेवेंट चीजें हटानी है. क्रॉस आउट द इररेलेवेंट ऑप्शंस एंड देन यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉर द रिमेनिंग ऑप्शंस. आई विल टेक यू थ्रू सम एग्जांपल्स नाउ. ठीक है, we'll quickly solve a few questions. This is question number 1. Take 60 seconds to read it and then I'll take you through the solution. Alright, I'll begin reading the question now. Which of the following, if true, undermines the argument above? Now I read the passage. कि ठीक है, मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन आ गई कि कौन सा ऑप्शन इन पांचों में से जो पैसेज का आर्ग्यूमेंट है उसको अंडरमाइन करेगा. अंडरमाइन करना मतलब वीकन करना. ठीक है, वीकन करना आर्ग्यूमेंट को. नाउ लेट्स रीड द पैसेज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी is the average age or death of the entire live born population. In the middle of the 19th century, life expectancy in North America was 40 years, whereas now it is nearly 80 years. Thus, in those days, people must have been considered old at an age that we now consider the prime of life. ठीक है, अब मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ 2-3 लाइन्स में. In 2 to 3 lines, I want to summarize this. What is the premise? Premise is life expectancy average होती है. ठीक है, एवरेज एज होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पूरी पॉपुलेशन की. उसके बाद हमारे पास और क्या है प्रेमाइस में कि नॉर्थ अमेरिका में
19th सेंचुरी में 40 इयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 40 इयर्स. प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? 80 इयर्स. ठीक है. और उसके बाद कंक्लूजन क्या है हमारे पूरे आर्ग्यूमेंट का कि द अगर वो पुराने लोग अगर पुराने लोग क्या कहते हैं, इन दोज डेज पीपल मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड ओल्ड एट एन एज दैट वी नाउ कंसिडर द प्राइम ऑफ लाइफ. कंक्लूजन इस पैराग्राफ का ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 19th सेंचुरी में 40 इयर्स थी, अब 80 इयर्स है. तो आज की डेट में अगर वो लोग होते तो दे वुड हैव बीन इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि अगर लोग 80 पे मर रहे हैं तो द अजम्पशन इज 40 इज द प्राइम एज which was life expectancy in the 19th century. So there are two three premises and then there is a conclusion. ठीक है. अब मेरे को क्वेश्चन याद है कि मेरे को वो चीज चूज करनी है जो पूरे आर्ग्यूमेंट को अंडरमाइन करे. Now let's go through the options one by one. In the middle of the 19th century, the population of North America was significantly smaller than it is today. This to me is irrelevant. Why is it irrelevant? Why is it irrelevant? It is irrelevant to me because it does not matter कि population smaller थी larger थी, क्योंकि हमें तो average age निकालनी है ना, तो वो तो फॉर्मूले में आ ही जाता है. तो ये जो information है, this is irrelevant to the argument. Okay, let's go to the next one. Most of the gains in life expectancy in the last 150 years have come from reductions in the number of infants who die in their first year of life. अब आप लॉजिकली सोचो. ठीक है. रीड द फर्स्ट सेंटेंस. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज एज एट डेथ. ठीक है. तो फॉर्मूले में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब कैलकुलेट होती है तो वो डेथ के टाइम पे एज लेती है. व्हाट इज दिस ऑप्शन टेलिंग यू? दिस ऑप्शन इज टेलिंग यू कि पिछले 150 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इन्फेंट्स हु डाई इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हैज गॉन डाउन. ठीक है. तो अगर पहले 1 मिलियन इन्फेंट्स मरते थे अपने फर्स्ट ईयर में, तो आज की डेट में वो 10,000 हो गया होगा नंबर. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड कि बिकॉज चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 हैज गॉन डाउन, सो योर एवरेज विल इंक्रीज बिकॉज एज एट डेथ is also increasing. पहले kids were dying before the age of 1. Now kids are living up to 80 years. Right? So because that adds to your formula, this is making sense logically. ठीक है. अब हमने इसको back burner पे रख दिया. Now let's move on to the other options and validate whether this is going to be the correct one or there is a stronger argument than this. Many of the people who live to an advanced age today do so only because of medical technology that was unknown in the 19th century. This is not undermining, this is rather supporting the argument. If you understand the meaning. ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कि आज की डेट में लोग 80 तक इसलिए जीते हैं क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी आज की डेट में अच्छी है जो 19th सेंचुरी में थी नहीं. तो वो अंडरमाइन नहीं कर रहा है, वो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, दिस इज वन रीजन. That is why we'll eliminate this because this is supporting the argument and this was already irrelevant. Now let's move on to D. The proportion of people who die in their 70s is significantly smaller today than is the proportion of people who die in the 80s. This is again supporting the argument. If you understand the meaning of this option, इस option का मतलब क्या है? इस option का मतलब है कि people जो 70 साल के हैं वो और मर रहे हैं, उनका रेशियो जो है कम है. People who die in their 80s, the ratio of those people is more, right? This is what this option is telling you, that people are in all likelihood going to die when they are in the 80s. तो जो एवरेज आपकी एक्सपेक्टेंसी है वो तो बढ़ ही रही है क्योंकि लोग 80 साल के ऊपर तक जी रहे हैं, राइट? So this is also supporting your argument and not undermining your argument. That is why we eliminate this one. Let's look at the last one now. More people in the middle of the 19th century engaged regularly in vigorous physical activity than do so today. Now this is ringing some bells in my head because this is telling me कि 19th century में लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे. ठीक है. और हमें पता है कि एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है.
बट क्योंकि आपके पास और इंफॉर्मेशन नहीं है कि अच्छा ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक्सरसाइज करके डू वी हैव डेटा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है और कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। और अगर हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो कितने लोग 40 के ऊपर तक जी पा रहे हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो इवन दो दिस ऑप्शन इज गिविंग यू सम रीजंस, this option is ringing some bells in your head, we need more information which is missing in this option. That is why I will write more info needed, ताकि ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली अंडरमाइन कर पाता है इस चीज को, ठीक है। दैट इज वाई वील एलिमिनेट इवन दिस ऑप्शन एंड वील गो अहेड विद दिस वन, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गिविंग अस अ लॉट ऑफ logical reasons to undermine the entire passage here. I'll I'll circle back to this. I'll circle back to this. Our question was कि क्या चीज अंडरमाइन करेगी हमारे पूरे आर्ग्यूमेंट को। ये वाला कह रहा है कि भैया आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं वो 80 साल तक जी रहे हैं, और पहले इन्फेंट्स 1 साल से पहले ही मर जाते थे। This is the amount of progress we've made in 150 years. Therefore, those people whom we considered old in 19th century won't be in their prime of life, would be in their prime of life, but that was only possible because we have made such gains in the last 150 years in the reduction in the number of infants who die in the first year of life. ठीक है, ये आपका लॉजिकली पूरे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है। नाउ आई गिव यू सम पॉइंटर्स। नंबर 1, जब आपके क्रिटिकल रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अंडरमाइन या वीकन द आर्ग्यूमेंट लिखा हो, what are we looking for, what are we looking for in those questions? What we are looking for in those questions is हम लोग थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपने ऑप्शंस में से, जो आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को, जो आपकी पूरी अजम्पशन को रिफ्यूट कर दे, आपके अजम्पशन जो है उसको वीकन कर दे। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन, this was additional information that was breaking our assumption, so we need such additional information. अब आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें बोलेंगे कि लुक फॉर द ऑप्शन दैट strengthens the argument, right? Then we are looking for such statements, we are looking for additional information that will support the argument that is mentioned in your passage, ठीक है। दीज टू वर सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, दे वर स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ अंडरमाइनिंग इट, ऑल राइट। और तीसरा, हमने पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कार वाला, उसमें ऑलरेडी पढ़ लिया था कि देर आर देर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल आस्क यू टू पिक आउट अजम्पशंस। अब अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन वो होती है, वो वाला ऑप्शन होता है जो बेसिकली is very very needed to reach the conclusion logically. That is what your assumption is. For example, if we go back to this, the assumption is कि कार जो है, कार से ही हम लोग मार्केट जा सकते हैं, हम ऑटो बस मेट्रो से जा ही नहीं सकते। सो यू नीड दैट assumption फॉर दिस कंक्लूजन टू मेक सेंस, और यू नीड द assumption कि कार रिपेयर ही नहीं हो सकती फॉर दिस कंक्लूजन टू मेक सेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। All right, let's move on to another question. Homeowners aged 40 to 50 are more likely to purchase ice cream and are more likely to purchase it in larger amounts than are members of any other demographic group. The popular belief that teenagers eat more ice cream than adults must therefore be false. Take 30 seconds to try to fit in the answers in the options in your head, and then I'll take you through the solution.
All right. I hope you've read the options and you've read the question. Question क्या बोल रहे? The argument is flawed. This is very important. The argument is flawed primarily because flawed का क्या मतलब है? Flaw का मतलब है कि there is a mistake in the argument. There is a mistake. अब अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था दी फाइंड आउट द ऑप्शन दैट अंडरमाइंस द आर्ग्यूमेंट और वीकन्स द आर्ग्यूमेंट. उसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए थी. फ्लॉ ढूंढने के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. फ्लॉ का मतलब है कि ये जो पैसेज है इसके अंदर देर इज अ मिस्टेक ऑलरेडी. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दैट मिस्टेक इज. ऑलराइट, नाउ लेट्स लीड द पैसेज. होमओनर्स aged 40 to 50 are more likely to purchase ice cream. Okay, I'll just underline this. 40 to 50 are more likely to purchase ice cream and are more likely to purchase it in larger amounts. This is important. Than are members of any other demographic group. ठीक है. The popular belief that teenagers eat more ice cream than adults. Teenagers more than adults must therefore be false. ठीक है. अब आपके पास ये कंक्लूजन है. आपके पास दो प्रेमाइस है. क्या प्रेमाइस है कि 40 to 50 वाले ज्यादा आइसक्रीम लेते हैं देन एनी अदर एज ग्रुप. और दूसरा प्रेमाइस है कि नहीं, पहला प्रेमाइस है कि दे आर मोर लाइकली टू परचेज. दूसरा प्रेमाइस है मोर लाइकली टू परचेज इन लार्जर अमाउंट्स. ठीक है, ये दो प्रेमाइस है. और आपके पास कंक्लूजन है कि जो पॉपुलर सोसाइटी में बिलीफ है कि टीनेजर ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं वो गलत है शायद, क्योंकि आपका डेटा आपको कह रहा है ये. ठीक है. नाउ Anushka says option A is the flaw. All right, Anushka, thank you for your participation. Let's look at the options. Fails to distinguish between purchasing and consuming. Now this is very important. आपका प्रेमाइस था परचेज के बारे में और आपकी कंक्लूजन है ईट के बारे में, कंजम्पशन के बारे में. सो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन, but I'll still go through the other options just to identify where the other options are going wrong. ठीक है. Option B says does not supply information about homeowners in age groups other than 40 to 50. Now this is wrong. Why is this wrong? Because it is supplying us with information, right? It is telling us 40 to 50 are more likely than are members of any other demographic group. मतलब वो कह रहे हैं जो 40 to 50 वाले homeowners हैं वो 30 to 40 वाले से ज्यादा लेते हैं, वो 20 to 30 वाले से ज्यादा लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे मोर देन यूज हुआ है ना, मोर देन एनी अदर मेंबर्स ऑफ डेमोग्राफिक ग्रुप. तो ये जो आपका बी है दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स बिकॉज द आर्ग्यूमेंट इज सप्लाइंग इंफॉर्मेशन. इट इज ऑलरेडी टेलिंग अस कि 40 to 50 अदर डेमोग्राफी से ज्यादा खरीदते हैं, राइट. लेट्स लुक एट ऑप्शन सी. Depends on popular belief rather than on documented research findings. Now this is something that the question has not even mentioned. Question है documentation के बारे में बात ही नहीं करी है. ठीक है. This is depends on popular belief. There is no popular belief because they are telling us homeowners ज़्यादा ले रहे हैं. अब हमें ये नहीं पता कि homeowners का ये जो data है ये कहाँ से आया है. So this is talking about something that is not even mentioned in the question. Let's look at option D. Does not specify the precise amount of ice cream purchased by any other demographic group. Is that important? अगर हमारे पास precise information होती तो क्या argument में कोई change होता? क्योंकि argument आपका क्या कह रहा है? Argument कह रहा है कि वो ज्यादा लेते हैं. तो अगर आपके पास 20 to 30 वाले के लिए लिखा भी होता या 30 to 40 के लिए लिखा भी होता कि ये 40 ब्रिक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 ब्रिक्स ऑफ वनीला ले रहे हैं, तो इज दैट इंपॉर्टेंट? क्योंकि 40 to 50 वाले तो 40 से ज्यादा ही ले रहे हैं, वो तो आपको क्वेश्चन बता ही रहा है. तो दिस इंफॉर्मेशन इवन इफ मेंशन्ड वुड नॉट चेंज द आर्ग्यूमेंट. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फाइनल ऑप्शन. डिस्कसेस ice cream rather than more nutritious and healthy foods. Now this is irrelevant. The question is talking about ice cream. Irrelevant क्या चीज़ है? Irrelevant are any other food items, क्योंकि the argument is about ice cream, so it has to discuss ice cream. All right. So A, Anushka, congratulations. A is the correct option. Now try to understand कि flaw के लिए हमने क्या निकाला. Flaw के लिए हमारे पास already argument में mistake mentioned थी. So this is how you solve questions which are talking about flaws. You identify आपके argument में क्या mistake है. ठीक है. Weakening में
हमें आर्ग्यूमेंट में मिस्टेक नहीं चाहिए, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारी अजम्पशन को वीक करता है. जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसके लिए वी नीडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वाज वीकनिंग द अजम्पशन मेड इन द आर्ग्यूमेंट. दिस इज अबाउट picking out information that is already mentioned in the question. Now let's do another question. Take 60 seconds, read it out loud. Which of the following, if true, best explains the reason for the apparent discrepancy described above? तो आपको इसमें क्या चाहिए? आपको इसमें रीजन ढूंढना है इन ऑप्शंस में से. अब आप पैसेज पढ़ो, then read the options and then I'll take you through the solution. Okay. Which of the following, if true, best explains the reason for the apparent discrepancy described above? So हमें options में से reason ढूंढना है. Now let's read the passage. A report that many apples contain a cancer-causing preservative. Okay, apples contain a cancer-causing preservative called alar apparently had little effect on consumers. Few consumers planned to change their apple buying habits as a result of the report. ठीक है. Nonetheless, sales of apples in grocery stores fell sharply in March, a month after the report was issued. Now, what is the this is the conclusion. ठीक है. आपका conclusion क्या है कि आपकी एप्पल्स की जो सेल है वो मार्च में बहुत ज्यादा गिर गई रिपोर्ट के बाहर आने के एक महीने बाद. प्रेमाइस क्या है कि एक रिपोर्ट निकली है जो आपको बता रही है कि एप्पल्स में कैंसर कॉजिंग प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है, बट उस रिपोर्ट का बहुत ही लिटिल इफेक्ट है कंज्यूमर्स में. दैट इज प्रेमाइस नंबर 1. प्रेमाइस नंबर 2, बहुत ही कम कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने बोला कि वो अपनी एप्पल बाइंग हैबिट्स को चेंज करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द रिपोर्ट. दिस इज प्रेमाइस नंबर 2. कंक्लूजन कि रिगार्डलेस ऑफ दिस कंज्यूमर बिहेवियर एप्पल की सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई. अब आपको ऑप्शंस में से रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है. लेट्स लुक एट ऑप्शन ए. In March, many grocers removed apples from their shelves in order to demonstrate concern about their consumers' health. So this is making some sense कि मार्च में बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स ने, बहुत सारे एप्पल सेलर्स ने एप्पल ही हटा दिए. अब एप्पल नहीं होंगे तो एप्पल की सेल तो गिरेगी ही ना. सो दिस इज लॉजिकल, दिस इज मेकिंग सेंस. So we'll put this on the back burner before till the time we invalidate all the other 4 options. Let's look at all the other 4 options now. Because of a growing number of food safety warnings, consumers in March were indifferent to such warnings. Acha. Because of a growing number of food safety warnings, consumers in March were indifferent to such warnings. तो ये तो आपके ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है ना. ये आपको क्या कह रहा है कि बहुत ज्यादा फूड सेफ्टी की वार्निंग्स थी तो कंज्यूमर ने ना उनको ध्यान देना ही छोड़ दिया. अब कंज्यूमर अगर सेफ्टी वार्निंग को ध्यान नहीं दे रहा तो मतलब कंज्यूमर बिहेवियर चेंज ही नहीं हो रहा. कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू दिस रिपोर्ट. कंज्यूमर विल कंटिन्यू बाइंग एप्पल्स like nothing is happening. So this is not explaining the reason, that it is rather telling you why consumer behavior was not changing, right? So this is incorrect. We need a reason for the sales going down. We don't need any other information. We need a reason for the sales going down. Let's look at option C. The report was delivered on television and also appeared in newspapers. This is again irrelevant information. This is not giving us any reason as to why the sales will go down. This is just telling us कि report consumer तक पहुंची कैसे. ठीक है. So I'm sorry. Yes, we do away with option C. Let's look at option D. The report did not mention that any other fruit contains alar, although the preservative is used on other fruit. This is again irrelevant information. We are talking about apples. We are not concerned about any other fruits. Let's look at option E.
Public health officials did not believe that apples posed a health threat because only minute traces of LR were present in affected apples. Again, this is supporting your argument. This is again telling us why consumer behavior should not change. This is not telling us why the sales still went down. Public health officials did not believe that apples posed a health threat, right? So that is why consumers were perhaps indifferent. But we don't need that from the options. We need a reason for the sales going down. Sales went down because grocers removed apples. Apples थे ही नहीं तो एप्पल बिकेंगे कैसे? रिगार्डलेस ऑफ वेदर टीवी पे न्यूज मिली या न्यूज़पेपर पे न्यूज मिली या लोग उस न्यूज को ध्यान दे रहे थे या लोग उस न्यूज को लेके इंडिफरेंट थे या आपको हेल्थ ऑफिशियल्स क्या एडवाइस कर रहे थे, हमें ये सब चाहिए ही नहीं. हमें तो रीजन चाहिए कि हमारी सेल क्यों गिर गई. ठीक है. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. Read the question. Read the question first. Which of the following, if true, most helps to explain why acting on the consultant's recommendation failed to achieve its goal? हमें फिर से यहाँ पे क्या चाहिए? Reason चाहिए. Let's read the passage now. Let's read the passage. In order to reduce the number of items damaged while in transit to customers. In order to reduce number of items damaged. This is important, I guess. Packing Packaging consultants recommended that the True Save mail order company increases the amount of packing material. Increase the amount of packing material so as to fill in empty spaces in its cartons. Accordingly, True Save officials instructed the company's packers to use more packing material than before. This is also important, I guess. And the packers zealously acted on these instructions and used as much as they could. Nevertheless, customer reports of damaged items rose somewhat. Alright, so what is the conclusion of the passage? The conclusion of the passage is कि customer report जो है about damaged items, the the complaints increase. That is the conclusion. What is the premise? Premise is कि एक कंपनी है आपके पास ट्रू सेव नाम से, उन्हें कंप्लेंट्स कम करनी थी. उन्हें क्या करना था? उन्हें रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स डैमेज. उन्हें ये चीज़ कम करनी थी. तो उन्होंने पैकेजिंग कंसल्टेंट को बुलाया. कंसल्टेंट ने बोला कि भाई तुम अपने कार्टन को पैकिंग मटेरियल से भरो तो जो आपका आइटम है वो कभी भी डैमेज नहीं होगा. तो ऑफिशियल्स ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी अपने पैकर्स को कि तुम भाई अपने कार्टन में बहुत सारा पैकिंग मटेरियल यूज करो. और तो उन्होंने बहुत सारा और पैकिंग मटेरियल यूज करा. बट कंक्लूजन क्या है कि फिर भी हमारी कंप्लेंट्स ऊपर गई, नीचे नहीं आई. राइट? तो दिस इज व्हाट द पैसेज इज टेलिंग अस. Now let's look at the reasons and try to identify which one is an actual reason and what is irrelevant and what is basically not a reason at all. Option A. The change in packing policy led to an increase in expenditure on packing material and labor. अच्छा, ये हमें क्या बोल रहे हैं? ये हमें बोल रहे हैं कि पैकिंग पॉलिसी में जो चेंज हुआ उससे एक्सपेंडिचर बढ़ गया. अब एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो परहैप्स आपकी कंपनी का जो है प्रॉफिट कम होगा. एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कमाई उतनी है तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना. प्रॉफिट से हमारी कंप्लेंट्स का क्या लेना देना है? सो दिस इज इररेलेवेंट. दिस इज टेलिंग अस कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हुआ है, बट प्रॉफिट से हमारी कंप्लेंट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है. सो दिस इज इररेलेवेंट. ऑप्शन नंबर बी. When packing material is compressed too densely, it loses some of its capacity to absorb shock. Now this is making sense to me.
दिस इज टेलिंग मी कि जब आप बहुत ज़्यादा पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, तो उसकी शॉक एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो शायद डिलीवरी के टाइम, शायद उस प्रोसेस में क्योंकि शॉक एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, तो आपकी आइटम्स डैमेज हो। दिस इज मेकिंग सेंस। आई विल पुट दिस ऑन अ बैक बर्नर. लेट्स लुक एट ऑप्शन सी, डी एंड ई नाउ. The amount of packaging material used in carton does not significantly influence the ease with which a customer can unpack the package. Okay. Now this is telling us something very interesting. वो कह रहा है कि जितना ज़्यादा पैकिंग यूज़ करोगे, या जितना आप पैकिंग यूज़ करोगे, मटेरियल जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, तो उससे कस्टमर का ईज ऑफ अनरैपिंग द पैकेज डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस. तो आप चाहे कम यूज करो या ज्यादा यूज करो, कस्टमर इज ओपनिंग इट विद द सेम ईज. अगेन दिस इज टेलिंग अस नथिंग अबाउट व्हाई द आइटम्स आर गेटिंग डैमेज्ड. ऑल राइट, दिस इज टेलिंग अस समथिंग different altogether. Let's look at option D. Most of the goods that TrueSafe ships are electronic products that are highly vulnerable to being damaged in transit. What is being shipped is irrelevant. वट इज बीइंग शिप्ड इज इररेलेवेंट. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वो कर रहे हो, या वो आपको क्या कहते हैं, हार्डवेयर चीजें बेच रहे हो, राइट? आपका प्लास्टिक का कुछ भी आ रहा हो, आपका मेटल का कुछ भी आ रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका जो कंसल्टेंट है उसने तो आपको ये बोला ना, आप और ज्यादा पैकिंग मटेरियल यूज करो तो डैमेज कम होगा. अब क्या चीज डिलीवर हो रही है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? दिस इज अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन that is irrelevant. Let's look at the last one. TrueSave has lost some of its regular customers as a result of the high number of damaged items they received. This is telling us that TrueSave has lost credibility. This is not telling us why complaints increased even after taking the advice from our packaging consultants. This is telling us a consequence. This is not telling us a reason. All right. So guys, we've thus far arrived at B, which seems to be the most logical explanation for why complaints would increase even after listening to our consultant. All the other either seem irrelevant or are giving us information that does not influence the complaints, the number of complaints. All right. Therefore, we go with option B. That is pretty much it for today's lesson. I hope you've understood whatever it is we've covered thus far. हमने काफी सारी चीजें कवर करी. हमने पहले ये कवर करा कि जब भी हम क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज सॉल्व करने के लिए जाएं, उसके लिए हमें एक्टिव रीडिंग करनी है ताकि हमें पैसेज दोबारा से ना पढ़ना पड़े. और एक्टिव रीडिंग करने का मतलब है कि आप पढ़ते ही समझ जाओ कि पैसेज आपका बता क्या रहा है, which means you have to summarize what the passage is telling you in your head before you move on to solve the question. Yes. Number two, we've covered that there are two parts to any passage: premise and the assumption. प्रेमाइज से आपकी कंक्लूजन आ जाती है. कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपका पैसेज कोई अजम्पशन बना रहा होता है, तो हमें मैक्सिमम अपने पैसेज में प्रेमाइज और अजम्पशन तक लैंड करना है. ठीक है. Number three, we've covered questions pertaining to picking out flaws. We've covered questions pertaining to identifying what is weakening or undermining the argument. हमने ये दो चीजें आज मोटा मोटा कवर करी हैं. Going forward, we'll cover more patterns of critical reasoning questions and more and more tricks to how we can become more logical while reading the questions that we get. They are so very wordy, right? बहुत ही बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस यूज हो रहे हैं, बट अगर आपने समझा हो अब तक, मीनिंग बहुत ही सिंपल आता है. जो लॉजिकल मीनिंग निकल के आता है आपके क्वेश्चन से, पैसेजेस से, वो बहुत ही सिंपल है, right? So join me again tomorrow at the same time, 4 p.m. to 5 p.m. We'll solve more and more critical reasoning questions. Till then, stay safe,